नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो के साथ। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करी। पहले सीरीज में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस पार्ट 2 में। और जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये जो सीरीज है ये आपके बहुत सारे एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में या बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स एग्जामिनेशंस हैं उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हैं, आप लोग जरूर देखें और एक कॉपी और पेन रख लें और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके आंसर्स आप उसमें नोट करते रहें। तो लास्ट में मैं इसकी आंसर शीट आप लोगों को बताऊंगा। आप भी अपना थोड़ा एक सेल्फ टेस्ट हो जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। और उसके बाद पहले क्वेश्चन की ओर पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि 50 क्वेश्चंस हम पहले सीरीज में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, फ्रेंच बीन इज ए नेटिव ऑफ ए मेडिटेरियन रीजन, बी एशिया, सी साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 52, which one of the following fertilizer is least hygroscopic? A urea, B ammonium sulfate, C diammonium phosphate and D calcium ammonium nitrate. Question number 53, which one of the following oil cakes in addition to its manorial value act also as a nitrification inhibitor? इसके options हैं A mustard, B groundnut, C neem और D. Question number 54, nitrogen is absorbed in a form of A nitrite, B nitrite, C nitrate या D ammonia. Question number 55, fruit setting in a brinjal is usually in the flower having A medium style, B short style, C long and medium style और D short and medium style. Next question को चलते हैं। Question number 56, scientific name of Indian bean is A Vigna sinensis, B Vicia fava, C Phaseolus vulgaris या D Dolichos love. Question number 57 पे चलते हैं। The following is not a plant growth regulator. Not a plant growth regulator. A acetic acid, B auxin, C gibberellin या D ethylene. Question number 58. Which one of the following organic manure has the narrowest CN ratio? Okay, A biogas slurry, B farmyard manure, C compost या D groundnut cake. Question number 59, fungicide used for controlling powdery mildew disease of pea is A Captan, B Indofil M45, C Carathin या D none of these. Question number 60, loam contains suitable nutrients for plant growth and it can A retain water, B store food, C store energy या D provide heat. Question number 61, pure line breeds refer to A heterozygosity only, B homozygosity only, C homozygosity and self assortment or D heterozygosity and linkage. Question number 62, which one of the following processes exception of Mendel's law? A mutation, B variation, C cloning or D linkage. Question number 63, question number 63 है, cystic fibrosis is A sex linked recessive disorder, B autosomal dominant disorder, C autosomal recessive disorder or D sex linked dominant disorder. Question number 64, mechanism which promote cell pollination? A cleistogamy, B dichogamy, C male sterility or D all of the above. Question number 65, question number 65 है, line developed from continuous selfing of cross pollinated species is called A pure line, B inbred line, C strain और D synthetic varieties. Question number 66 पे चलते हैं। Quickest method of plant breeding? A introduction, B selection, C hybridization और D mutation breeding. Next question है question number 67. Homozygosity and heterozygosity of an individual can be determined by A backcross,
B. Self-fertilization, C. Test cross, or D. All of the above. Question number 68. DNA synthesis takes place at which stage? A. G1 phase, B. G2 phase, C. S phase, or D. None of these. Question number 69. Bagging is done to A. Avoid cross pollination, B. Avoid self pollination, C. Achieve desired pollination, or D. Prevent contamination from foreign pollen. Question number 70. Development of embryo from egg cell without fertilization. A. Apomixis, B. Parthenocarpy, C. Parthenogenesis, or D. Apospore. Question number 71. Which one of the following is true about self-pollination? A. Increase homozygosity, B. Increase homozygosity, C. Increase heterozygosity, or D. Do not have any effect. Question number 72. Polyploidy is induced through A. Irradiation, B. Mutagenic chemical, C. Ethylene, or D. Colchicine. Question number 73. In apomixis, the progeny closely resemble to A. Male parent, B. Female parent, C. Both, or D. None of the above. Question number 74. A male sterile line which is used as a female parent in hybrid seed production. A line, B line, C R line, or D pure line. Question number 75. Somatic hybridization is achieved through A. Grafting, B. Conjugation, C. Protoplasm fusion, or D. Recombinant DNA technology. Question number 76. Alleles are A. Alternate form of gene, B. Linkage gene, C. Chromosome that have crossed over, or D. Homologous chromosome. Question number 77. Plant which are unable to produce functional pollen and fertilize the female part is called A. Self-incompatible, B. Self-pollinated, C. Male sterile, or D. Male fertile. Next question, question number 78. Which one of the following method is used for population improvement? A. Pure line selection, B. Mass selection, C. Recurrent selection, or D. Clonal selection. Question number 79. New varieties of plant are produced by A. Introduction and mutation, B. Selection and hybridization, C. Mutation and selection, or D. Selection and introduction. Next question, question number 80. Reason for genetic male sterility. A. Single dominant gene, B. Single pseudo dominant gene, C. Single recessive gene, or D. All of the above. Question number 81. Name a disease or plant in which dark to light brown rot form around wounded plant tissue. A. Grey mold, B. Citrus canker, C. Spider mites, or D. None of the above. Question number 82. In which of the following disease or plant chlorophyll of the get destroyed and leaves get shrinked? A. Mosaic disease of tobacco, B. Citrus canker, C. Tundu disease of wheat, or D. Rhizoctenia. Question number 83. Name of the disease of plant in which fine weaving occur on underside of the leaves. A. Spider mites, B. Anthracnose, C. Mealybug, or D. Rhizoctenia. Question number 84. Hot treatment of seed is done against A. False smut, B. Loose smut, C. Flag smut, or D. Air cock. Question number 85. Witch's bloom in different plant is caused by A. Mycoplasma like organism, B. Virus, C. Fungi, or D. All of the above. Question number 86. In which disease of plant white mildew appear typically on underside of the leaf? A. Cylindrocladium, B. Anglo leaf spot, C. Downy mildew, or D. Black arm of cotton. Question number 87. Name of the disease of plant in which leaves, branches, fruit all are affected. A. Spider mites,
बी मिलीबग, सी एफिड और डी सिट्रस कैंकर। क्वेश्चन नंबर 88, डेथ ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू इज कॉल्ड ए इंक्यूबेशन, बी नेक्रोसिस, सी कोनाइडिया और डी ब्लाइटिंग। क्वेश्चन नंबर 89, नेम ऑफ द डिजीज ऑफ प्लांट इन विच लार्ज येलो स्पॉट appear in the leaves. A. Bacterial blight, B. Bacterial spot, C. Aphid or D. Botrytis. Question number 90. Which group is resistant to potato cyst nematode? A. Kufri Swarna, B. Kufri Malar, C. None of the above and D. A and B both. Question number 91. Molia is a disease of A. Rice, B. Wheat, C. Sugarcane or D. Maize. Question number 92. Which disease of plant is known as a ring disease? A. Citrus canker, B. Black arm of cotton, C. Wilt of potato or D. None of the above. Question number 93. The causal organism of leaf smut of rice is Antilloma aurelia, B. Tyletia bacteriana, C. Xanthomonas oryzea or D. Telesia aurelia. Question number 94. Late blight of potato caused by A. Phytophthora erythrospitica, B. Phytophthora infestans, C. Pythium aphanidermatum or D. None of the above. Question number 95. Bacterial blight of rice disease of plant is caused due to which bacteria? A. Pseudomonas bacteria, B. Xanthomonas citrae bacteria, C. Xanthomonas aurelia bacteria or D. None of the above. Question number 96. In which disease of plant stem rot at soil line with brown to red lesion? A. Rhizoctonia, B. Anglo leaf spot, C. Bacterial blight or D. Bacterial spot. Question number 97. Foot rot disease in rice is due to A. Xylella fujicoria, B. Rhizoctina solanae, C. Phytophthora infestans or D. Fusarium oxyporium. Question number 98. Late blight of potato was first introduced in India in which place? A. Ooty, B. Nilgiri Hills, C. Aravat or D. Bihar. Question number 99. Bunchy top of banana plant disease is caused due to A. Bacteria, B. Fungi, C. Virus or D. Mycelium. Now the last question, question number 100. The black 47 is related to A. Tomato, B. Wheat, C. Potato और D. Banana. तो आपके ये 100 क्वेश्चन हो गए और इसके आंसर देखते हैं। तो आंसर शीट पे चलते हैं। ये इसके आंसर शीट है। क्वेश्चन नंबर 51 का C, 52 का C, 53 का C, 54 का भी C, 55 का भी C, 56 का D, 57 का A, 58 का D, 59 का C, 60 का A, 61 का B, 62 का D, 63 का C, 64 का A, 65 का B, 66 का C, 66 का D, 67 का A, 68 C, 69 D, 70 C, 71 का A, 72 का D, 73 का B, 74 का A, 75 का C, 76 का A, 77 का C, 78 का C, 79 का B, 80 का C, 81 का A, 82 का A, 83 का भी A, 84 का B, 85 का D, 86 का C, 87 का D, 88 का B, 89 का A, 90 का A, 91 का B, 92 का C, 93 का A, 94 का B, 95 का C, 96 का A, 97 का A, 98 का B, 99 का C और 100 का भी C। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए और आप लोगों ने अपने आंसर चेक कर लिए होंगे और होप सो आप लोगों का अच्छा रिजल्ट रहा होगा। और इस प्रकार के अभी हम लोग ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहेंगे
क्योंकि इस समय बहुत सारे भी कॉम्पिटिशन्स होने हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होने हैं, तो उसके लिए हम लोग ये आपके लिए तैयारी करवा रहे हैं। और आगे भी हम इस सीरीज़ को, और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपना आप कमेंट ज़रूर करा करें जो भी आपको लगता है, और आगे आपको क्या फीडबैक है या आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो आप औरों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ये स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।